System pioneering education franchise. A great opportunity. Invest in a better tomorrow. Call now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो डिस्कस किए थे और आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। और आज हम इसके लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड उसके बाद हम देखेंगे जो इसकी पार्टनरशिप है, व्हाट इज़ द पार्टनरशिप एंड इट्स एंटिटीज़। उसके बाद हम व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड इट्स एंटिटीज़। उसके बाद हम इसकी जो फर्दर ब्रांचेस हैं उस पर डिस्कस करेंगे। उसमें लेट्स सपोज रिकॉर्ड कीपिंग एंड सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग को हम डिस्कस करेंगे। और उसमें ट्रांजैक्शंस की जो डिटेल है वो किस तरह एक डायरी में आपको मैं करके दिखाऊंगा किस तरह ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या कुछ आता है। सबसे पहले इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप आती है, जिसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है। अकॉर्डिंग टू DWT स्टेप 4, it is the simplest form of business organization which is owned and controlled by one man. Okay. Sole proprietorship is the oldest form of business organization which is owned and कंट्रोल्ड बाय वन मैन। यानी कि एक बिज़नेस एंटिटी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक ही पर्सन कंट्रोल करता है, जो कि कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर या उस बिज़नेस कंपनी का जो ओनर है वो उसको सारे उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को डील करता है। इन दिस बिजनेस वन मैन इन्वेस्ट्स द कैपिटल हिमसेल्फ। जो ओनर है उस कंपनी का वो उसमें इन्वेस्ट करता है अपना कैपिटल, सरमाया। ही इज़ ऑल इन डूइंग हिज बिज़नेस, और वो उस बिज़नेस का ऑल इन ऑल यानी कि थ्रू आउट द उसका जो भी है लेन देन वो एक ही आदमी उसका ऑनर करता है और उसके वो नुकसान और प्रॉफिट का वही ज़िम्मेदार होता है। ही एन्जॉयज़ द होल ऑफ द प्रॉफिट, और उसके जो प्रॉफिट मिलता है बिज़नेस का वो भी उसको एंजॉय करता है, और अगर कोई नुकसान होता है तो वो भी ऑनर को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। द फीचर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, और इसके जो बेसिक फीचर्स हैं उसमें कॉमन 6 इसके फीचर्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ईजी फॉर्मेशन, सेकंड अनलिमिटेड लायबिलिटी, द थर्ड इज़ ऑनरशिप, द फोर्थ प्रॉफिट, the fifth management, and the last sixth is easy dissolution। ये इसके 6 फीचर्स हैं जिस पे एक सोल प्रोप्राइटरशिप बेस करती है, और इन 6 फीचर्स को लेके एक ओनर जो है वो अपने बिज़नेस को रन करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, और इनके बिहाफ पे ही अपना बिज़नेस को प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में जो भी उसका फ्यूचर इम्पैक्ट होता है वो बनता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड to share the profits of a business
carried on by all or any of them acting for all। यानी कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा मेंबरान की एक डीड होती है जिसमें वो उस बिज़नेस जो भी वो बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो उनमें इक्वली डिवाइड होता है। यानी कि उसको कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी उसको रन तो तमाम शेयर होल्डर्स कर रहे होते हैं लेकिन उसका जो प्रॉफिट होता है वो भी फिर यकसा ही तमाम शेयर होल्डर्स में तकसीम किया जाता है, उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे। तो ये इसका रिलेशन होता है बिटवीन टू पर्सनस के दरमियान या इससे ज़्यादा। पार्टनरशिप मीन्स अ लॉफुल बिजनेस owned by two or more persons, the profit of the business shared by the partners in agreed ratio। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि उनमें एग्रीड रेशो के तनासब से उसको बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड किया जाता है तमाम जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं। उसके बाद द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज़ अनलिमिटेड। जो लायबिलिटी होती है वो हर पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, वो मैक्सिमम अपना जितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है वो कैपिटल अपना उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस होते हैं, एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन। जो उनके दरमियान एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इसी पार्टनरशिप एक्ट के तहत काम करती हैं। इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। इसमें को डिस्कस किया जाता है और जिनके तहत एक पार्टनरशिप रन करती है और एक पार्टनरशिप अपना पाया तकमील तक पहुंचती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लीगल एंटिटी, द सेकंड इज़ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, द थर्ड इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स of each partner, and the fourth is transfer of rights, the fifth is management, and the last six is number of partners, so and so. So this is the sixth features of a partnership that will act as partnership business between any persons of one or more than one business. And the third is that we will discuss the joint stock company in any business। तो नंबर थर्ड पे हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है और उसका क्या किरदार होता है एक बिज़नेस में। सो अकॉर्डिंग टू S.E. थॉमस, जो कि एक फ़िलासफ़र हैं, उनके मुताबिक इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है: अ कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड यूजुअली फॉर द परस्यूट ऑफ सम कमर्शियल पर्पसेस। एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की जाती है सम पर्सन्स के दरमियान, वो फॉर्मली यूज़ की जाती है फॉर सम कमर्शियल पर्पस के लिए। A joint stock company is a voluntarily association of persons created by law. It has a separate legal entity apart from its members. It can sue and be sued in its name. In the joint stock company, the work for organization begins before its incorporation by promoters and it continues after incorporation. The joint stock company has the following feature. First of all, creation of law. Second is separate legal entity. The third is limited liability, and fourth is transferability of shares. The fifth is number of members, and the last is common seal. एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो इन 6 फीचर्स पे अपना कारोबार रन करती है और इन्हीं पे बिहाफ करती है, जिसमें क्रिएशन ऑफ लॉ, separate legal entity, limited liability, transferability of shares, number of members, and common seal. So this is the definition of joint stock company. I hope आपको understand हो गया होगा। अगर कोई किसी का इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो रेज कर सकता है। Anyone else?
ओके, गुड। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे इसके जो बकाया फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आती है रिकॉर्ड कीपिंग एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो the evaluation of counting stated in the previous lecture continues with a slight emphasis on how actually record keeping started. In addition, some basic concepts like capital, profit, and budget are also introduced. So, first of all, we discuss the different types of business entities. So, the three types of business entities which is profit oriented is commercial organizations. Its entities is sole proprietor, partnership, and limited companies. And the second is non-commercial organization, that is called non-profit oriented, and its entities is NGOs, trusts, and societies. The basic concept of record keeping. What is the record keeping? The definition of record keeping is that we can maintain a diary of transaction and note the daily transaction like sales, purchase, etc. in it. Problems faced. उसके बाद हम इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हम देखेंगे कि रिकॉर्ड कीपिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो एक उसकी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने में फेस आती हैं. Someone, that is, how will we come to know the income and expenses from various sources. हम इनकम और एक्सपेंडिचर को वेरियस सोर्सेज में कैसे उसको लेजराइज कर सकते हैं. वी ओनली हैव अ शीट पब्लिक पेज ऑन विच डेली ट्रांजैक्शन आर लिस्टेड, जिसके लिए हमें सिर्फ एक शीट दरकार होगी जिसमें हम उसकी डेली के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. वी डू नॉट नो विच प्रोडक्ट इज़ सेलिंग बेटर एंड विच इज़ नॉट, और हमें ये पता नहीं होता कि कौन सी प्रोडक्ट का बेहतर सेल होगी और कौन सी नहीं होगी. सो अब इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा जिसके तहत आप अपनी इसको ट्रांजैक्शंस को एक डायरी पर आप उसको चढ़ाएंगे, तो वो लेक्चर के आखिर पे मैं आपको बता दूंगा. सो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, एंड इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में मिलेंगे. सो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा. गुड बाय.